कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम Hare Krishna, everyone. So I welcome all of you in our Bhagavad Gita discussion. Today we are going to discuss on the verse 15 and 16. Yesterday we had discussed very nicely about verse number 13 and 14, which were both the verses were very important. So today we are going to continue from 15 and 16. So before that, let us chant prayers. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौरांग की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। I'll be reading one very nice quote of Prabhupada. All of you can just focus on it. So Prabhupada is talking about the real problem of life in the material world. People are busy. हम सब लोग बिजी हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त हैं. अगर आप किसी स्टूडेंट या कोई यंग मैन जो कि वर्किंग प्रोफेशनल या कोई मैरिड मैन from different age group, if you meet them and ask them what are you doing, so people are busy, very much busy. So if you ask what is the essence, if you try to boil down your busyness, है ना, आप बहुत ज्यादा बिजी हैं तो किसके लिए बिजी हैं, क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं आप बिजी होकर. सो द आंसर वुड बी, द स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स वुड बी, I want to increase the maximize our happiness and decrease our suffering or mitigate our suffering. So for these two reasons people are working very hard. Sometimes जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, केवल स्पर्श मात्र से ही हम लोग माइंड में कॉन्सेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि ये मेरे लिए दुख है, ये मेरे लिए क्या है, सुख है. अगर ये मैं अचीव कर लिया तो आई विल बी हैप्पी, अगर मैं अचीव नहीं कर पाया देन आई विल बी नॉट हैप्पी. इवन दो आपके पास सारा मटेरियल नीड्स है जो कि आपको खुश, एक बेसिक नीड जो होता है ना खुश होने के लिए वो है, बट स्टिल आपने कंपेयर करके किसी और से कंपैरिजन कर लिया and then you are competing unnecessarily, thinking that अगर मैं उसको अचीव नहीं कर पाया then I will not be happy. So everybody, big businessmen, चाहे वो entrepreneur हो, चाहे वो किसी भी फील्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सब लोग people are working very hard. So अगर आप सर्वे करें कि क्यों आप वर्क कर रहे हैं, so ultimately the standard answer would be we want to increase our happiness. हैप्पीनेस कैन बी इन एनी कंडीशन. लोगों का हैप्पीनेस का अलग अलग डेफिनेशन भी है. कोई रिच बनना चाहता है, किसी को रिचनेस में हैप्पीनेस मिलता है, किसी को फैमिली में ज्यादा रहने से हैप्पीनेस मिलता है. सो सब लोगों का एक हैप्पीनेस का खुद का एक डेफिनेशन है. बट अल्टीमेटली पीपल वांट टू बी हैप्पी एंड दे वांट टू मिटिगेट द सफरिंग प्रॉब्लम्स व्हिच आर देयर इन देयर लाइफ.
So let us discuss something what Prabhupada is actually saying from the scripture Srimad Bhagavatam. SB matlab Srimad Bhagavatam. So whenever you see BG means Bhagavad Gita, SB matlab Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is the advanced study of Bhagavad Gita. Where Bhagavad Gita ends, there Srimad Bhagavatam begins. So don't get confused that what is SB BG. So this is from Srimad Bhagavatam, second canto, third chapter, verse number 2 to 7. So what is the translation? The real problem of life in the material world is to solve the question of birth, death, old age, and disease. People are busy to solve the problems, but actually they are not. They are not aware what are the real problems. So Sanatan Goswami, one of the 6 Goswamis, who was prime minister in the governor of Nawab Hussain Shah when Mughals were ruling in Bengal. Earlier, Bengal was very big. Even Bangladesh was in Bengal, and this Bihar and all these this province was coming into Bengal only. Bengal was 1/3 of total India, Bharat. So Sanatan Goswami, whose name was Dabir Khas, was Muslim. He was prime minister in the government of Nawab Hussain Shah during the time of Chaitanya Mahaprabhu. When Chaitanya Mahaprabhu appeared, that time Muslims were ruling in our country. They had invaded and they were ruling. So Sanatan Goswami, but he was very much a scholar in scriptures also. He was knowing 5 languages, Persian, Urdu, Hindi, and like that. He was knowing Sanskrit. So he was having the understanding of scriptures also. So when he met Chaitanya Mahaprabhu first time in Banaras, Varanasi, so Sanatan Goswami said that people call me very, very intelligent man. ग्राम्य व्यवहारे कहे पंडित. लोग मुझे पंडित बोलते हैं. पंडित means literal meaning of the pandit is very, very learned scholar. ग्राम्य व्यवहारे कहे पंडित सत्य कोरी मानी. ये बंगाली में डिस्कशन है. सत्य कोरी मानी, मैं ग्राम्य व्यवहारे कहे पंडित सत्य कोरी मानी. अपना रहिताय किछु नहीं जानी. खुद के बारे में तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ. अपना रहता है किछु न कुछ नहीं जानता मैं. लेकिन ग्राम्य व्यवहारिक जो गांव के लोग हैं, ग्राम्य व्यवहारिक कहे पंडित, वो लोग मुझे पंडित बोलते हो. यू आर सच अ ग्रेट स्कॉलर, यू नो सो मेनी लैंग्वेजेस, you know the scriptures, all these things. And by the way, especially this Sanatan Goswami, he was Brahman earlier of South India. He was coming from a very rich family, Saraswat Brahman family. Because he was very, very intelligent, so this Nawab Hussain Shah, he kidnapped him. And in fact Sanatan Goswami and Rup Goswami, these were 2 brothers. And आप लोग इनका नाम वृंदावन में अगर आप जाएंगे तो खूब सुनेंगे. These are 2 of 6 Goswamis, Rup Goswami, Sanatan Goswami. Later they became Goswamis. Goswami means missionaries in the movement of Chaitanya Mahaprabhu, who helped Chaitanya Mahaprabhu by dedicating their lives. So these were 6 principal Goswamis. So 2 of them, Rup Goswami, Sanatan Goswami, they were brothers. They belong to South India, and they were coming from Brahman family. But by the force of this Nawab Hussain Shah, these Muslims are from beginning only, they are very, very demoniac. So this Nawab Hussain Shah started terrorizing and attacking the villages of South India. And then they had to submit this Nawab, and then they accepted a job. And a Brahmana, the quality of a Brahmana is they will never accept any job whatsoever it may be. That is the first quality of Brahmana, that whatever it may be, he will not accept any kind of service under anybody. Some service is being accepted by Sudra. Job kaun karta hai? Sudra mentality people. Those who are Sudra, they do job. So if you see today, everybody is Sudra because everybody is looking for job. And if you don't get job, then you are outcasted. People will not value. So nowadays, being Sudra is promoted. Oh, he is such a great Sudra. He works in Microsoft. So, but earlier it was not the understanding. Any Brahmana, any respectable family, they will not accept any job. Even to my family, my grandfather, he was selected in when India-China war happened. That time, my grandfather became marshal, chief marshal that time. But he neglected, I will not accept job. So like that, because that earlier that was the mentality that they will not accept any job. Those who are actually Brahman. But actually today there is no Brahman. So Rupa Goswami, Sanatan Goswami, they did not accept, but they were forced because their villagers were being tormented.
and then because they accepted the job under that to a Muslim, so they became Muslim. Their name was converted as Dabir Khas Akar Malik. And they were working very honestly, very obediently, very judiciously under the government of Nawab Hussain Shah in Bengal. But when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas in and went to Puri, and after Puri he went to meet these two brothers, because Chaitanya Mahaprabhu was knowing about these two people. They were very learned, and their fame was uh, it was spread everywhere that these two brothers, they are very intelligent, very scholarly. So Chaitanya Mahaprabhu went and met there, and Chaitanya Mahaprabhu asked them to dedicate their lives in the mission, and they immediately understood, and they left their big position of prime minister, and Rup Goswami was finance minister. Rup Goswami could immediately relinquish the job, and he left the job and came to Vrindavan. But Sanatan Goswami also thought of leaving immediately. The Nawab, he understood that this second brother is also going to leave, so he put him behind the bars. To whom? Sanatan Goswami. So Sanatan Goswami then tried all the ways and means to get out of the prison house, and finally he got successful. He succeeded into getting out of the bars without knowledge of Nawab Hussain Shah. Then Sanatan Goswami, he fled from Bengal and he came to Varanasi. And there he met to whom? Chaitanya Mahaprabhu. And there he asked this question कि ग्राम्य व्यवहारे कहे पंडित सत्य कोरी मानी अपना रहिताय किछु नहीं जानी. लोग तो मुझे बहुत ही पंडित स्कॉलर बोलते हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा पंडित हूं कि मुझे खुद के बारे में ही नहीं जानता. फिर क्या बोलते हैं? ग्राम्य व्यवहारे कहे पंडित सत्य कोरी मानी अपना रहिताय किछु नहीं जानी. And then he asked question that I am just it is escaping from my mind, something like he asked the question about life, that I am suffering from the problems of life. I cannot solve the problems, I cannot mitigate the problems of my life, but still I am thinking that I am very great man. So what kind of great man I am, or what kind of a scholarly person I am, if I cannot solve the basic problems of my life, which are birth, death, old age, and disease. So actually, these are the problems of our life, actual problems. Financial problem, relational problem, mental problem. ये problems हम create करते हैं, actually problem नहीं है. Financial problem हमने create किया है. ये relational problem हमने create किया. relation में क्यों ही गए आप? relational problem फिर अगर हुआ तो आप परेशान हैं. और मेंटल प्रॉब्लम, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम, कुछ मटेरियल चीज नहीं मिला तो उसके लिए हम परेशान हैं, एकदम एंजाइटी में, जो कि वर्थलेस है. वर्थलेस, जिसके लिए प्रॉब्लम करना ही नहीं चाहिए, जिसके लिए हमें प्रॉब्लम में जाना ही नहीं चाहिए, जिसके लिए हमें एंजाइटी में आना नहीं चाहिए. फॉर दैट वी आर जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग, सो वी आर क्राइंग फॉर दैट. बट एक्चुअल प्रॉब्लम इज दीज दी फोर थिंग्स: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि. birth, death, old age, and disease. These are the four problems. So earlier this knowledge was known to everyone in our Indian culture, Sanatan culture, Vedic culture. Therefore, from the very beginning, they were trained that whatever you are doing, any activities you do, but all those activities should be centered around God, Krishna, because otherwise those activities will bind you and it will entangle you in the cycle of birth and death. So therefore, people were very conscious of how to perform the activity, and they were therefore they would perform the activity under the guidance of superior brahmanas. Brahmanas were the leaders of the society. There are no brahmanas today, so there are no leaders, so there are no guidance in the society, where to go, where to move, in which direction to move. So people are moving in their own direction, whatever they're whimsically they are doing whatever they want. जो सोसाइटी में ट्रेंड चल रहा है वही फॉलो करेंगे. एंड सोसाइटी के जो लीडर हैं, दे आर थर्ड क्लास demons, so they will set standard what third class thing, and that has become standard and people are trying to become that. अभी स्टैंडर्ड है शूद्रा बनो, तो पीपल आर इन दैट रेस ऑफ बिकमिंग शूद्रा. और अगर कोई जॉब नहीं करता तो उसको बोलते हैं अरे ये तो बेकार है. अदरवाइज इन आवर इंडियन कल्चर, वैदिक कल्चर, कोई जॉब नहीं कर रहा, ही इज वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन.
जो job, respectable person will not accept any job. He will read scriptures and he will guide the society. That is the real leadership. Leadership quality must contain this scriptural understanding. Otherwise, that leader is not a leader, he is a demon. He is a Rakshasa. And today, you see, any company, any organization, any institute, people are not God conscious. They are not Bhagavad Gita readers. They are not chanting Hare Krishna. So all are Rakshasas. This is not my words. Krishna says this. So let us read this. In other words, all such persons who aspire after gaining some or all of the material objects of enjoyment or gross materialistic persons are on the whole less intelligent, as confirmed in Bhagavad Gita 7th chapter verse number 20. It is said there that those who are bereft of good sense or those whose intelligence is withdrawn by the deluding energy of Maya aspire to achieve all sorts of material enjoyment in life by pleasing the various demigods. जैसे क्या लिखा है यहाँ पर 7.20 भगवद गीता में? It is said there that those who are bereft of all good sense or those whose intelligence is withdrawn by deluding energy of Maya aspire to achieve all sorts of material enjoyment in life by pleasing the various demigods or by advancing in material civilization. Material civilization करके sense gratification करते हैं, ये लोगों का goal है. But actually, what is the reality? Their knowledge is withdrawn by illusory energy. The real problem of life in the material world is to solve the question of birth, death, old age, and disease. No one wants to change his birthright. No one wants to meet death. No one wants to be old or invalid. No one wants to diseases. But these problems are solved neither by the grace of demigods nor by the so-called advancement of material science. Only by Krishna consciousness we can solve these problems of life. Otherwise, there is no hope. Material advancement कितना भी कर लें हम, we are not going to solve our problems of life. These are the real problems. So we should be intelligent. As I was discussing yesterday, Lord Buddha, why his name was Buddha? Because he was enlightened by seeing these things. आज हमने कोरोना में इतना देख लिया, but still our intelligence is not awakening. What has happened to our dull mind? We are so dull headed that कोरोना में इतने लोग मर गए, यूक्रेन में वार हो रहा है, so many things are happening in our surroundings also. Every now and then we can see that people are dying, getting diseases, but still we think that we are going to live here eternally. We are not able to see, so therefore it is called Pashyan api na pashyati. Deha patya kalatra deshu atmasanyeshu asatsvapi तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति. पश्यन अपि न पश्यति. अपि मीन्स ऑल दो, पश्यन देख रहे हैं, ना पश्यति और फिर भी अनदेखा कर रहे हैं. उन्होंने देखा कि उधर पड़ोसी उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई, मेरे पीछे वालों की डेथ हो गई, आगे वालों की डेथ हो गई, ऊपर वालों की, सबकी डेथ हो गई, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ? आई विल नॉट डाई. आई एम immortal. Death will not come to me. I will not become old. I will not die. Let me plan, work, this, that. All kinds of gymnastic we are doing. One thing we are not focusing, and all other things are we are focusing. What is that one thing? That this world is temporary. This whatever you achieve is temporary. So it is not here denying that you don't achieve, but don't forget to put one. Material achievements are all zero. Unless you put one in the beginning, everything becomes meaningless. So one is Krishna consciousness, chanting Hare Krishna. Are you chanting? No chanting, then your whole endeavor is useless because you are busy in accumulating zeros. जीरो, आप एक जीरो इकट्ठा कर लो, दो जीरो इकट्ठा कर लो, 10 जीरो इकट्ठा कर लो, अल्टीमेटली सब तो जीरो ही है ना. व्हाट इज द यूज ऑफ 10 जीरो? 10 जीरो मिला के एक बड़ा जीरो हो जाएगा. सो जिसके पास जीरो नहीं उसको लग रहा है यार जिसके पास 10 जीरो है. सो जिसके पास एक जीरो वो भी परेशान, जिसके पास 10 जीरो उसको वो भी परेशान. So ये अभी ये civilization चला. To accumulate zeros, people whole world is busy. People are busy in accumulating zeros, and zero means meaningless. But if we put one in the beginning, then all your material achievements become meaningful. So much material achievements are not denying, but how to engage that, how to make that senseful by using one, by placing one in the beginning. And what is that one? Krishna.
chanting Hare Krishna. Are we chanting? No chanting. That means your endeavors are useless. So those who are not chanting, those who have not incorporated chanting in their lives, they are leading very, very dangerous life, very risky life, their life will be doomed very soon. So please start chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is very, very simple process. There are no even hard and fast rules. No, not at all hard and fast rules. You get up and chant Hare Krishna. What is the harm? And but the result is very, very sublime. We'll get out of these problems, this suffering situation, this material world. And without Krishna, life is very, very risky life. But if Krishna is there, then you will be protected always. So human life, because we are endowed with that intelligence, that you can understand the risk in this world. Animals cannot understand. They are into diseased condition, they are killed, they are suffering, but they will never inquire. They will not go to the veterinary animal doctor. Why am I suffering? Why this problem is happening to me? They will never go, because that sense of inquiry is not given to them. And we are blessed to inquire, just like Sanatan Goswami is inquiring from Chaitanya Mahaprabhu, that people call me very intelligent, but I don't know how to solve the problems of life. So please enlighten me how to solve the problems. So this sense of inquiry is given to us, not the animals. Animals are also inquiring, by the way, but their inquiry is based on four things: eating, sleeping, mating, defending. You see, in the morning when birds birds are in the morning chirping, and then in their own words they are discussing where are foods, where is shelter, where is sex, all these things. So animals activities are centered around four things: eating, sleeping, mating, defending. In four things they are inquiring, but they can never inquire why suffering. Why one person came and he put a net, and he also put some grains, and we got caught into that, and now how to get relieved? They will never question how to get out of such suffering. They can never inquire. But we, in this intelligence here, Krishna has blessed brain substance. Krishna has given spiritual tissues are given here, but by indulging in intercourse, illicit affairs, meat eating, gambling, intoxication, ये जो इंक्वायरी वाला सेंस है ना, ह्यूमन इंक्वायरी, वो सब क्रश हो गया है. इसलिए स्पिरिचुअलिटी समझ में नहीं आती. Why people are atheists? Because people are indulged into these four habits, bad habits: ahar, nidra, bhay, maithun. So therefore this sense is not developing. Otherwise it is very simple to understand कि यार, yes, प्रभु जी जो आप बोल रहे हैं एकदम करेक्ट है. Life is very, very risky. At any time I go out from this room and I can slip on this ladders. I can get problems in my life. Today I am speaking, tomorrow I cannot speak. I can get any fracture. Yes, that is the truth. This is not fanaticism. This is the truth of life. But yes, practically we have to go about acquiring all those things. We should not stop achieving, but in what mood, what consciousness we should have, what consciousness we should carry. Just like when a mother, she slaps her child, what is the mood behind her slapping to that child? And another person, when he slaps that child, activity is the same, no, but mood is different, consciousness is different. Mother is slapping for the betterment of the child, so that child should go in right direction, but another person is slapping out of hatredness, out of animosity. So consciousness, everything is all about consciousness. What is the mood? Activity may appear same, but behind that activity, what is the mood of that activity? That we should learn. And we are conducting these classes. Unless if we don't learn the mood, then this class is useless. Even today, if we
continue that materialistic conception in our head, materially motivated even today we are, then this class, conducting class, is useless, no? So I'm not saying you stop your activity, and even Bhagavad Gita, Krishna did not say you stop your activity. Krishna, Bhagavad Gita is all about changing your consciousness, bringing about a real consciousness, not stopping the activity. Externals will be same, environment will be same, situations will be same, but consciousness will be different. Mother slapping a child and an outsider slapping a child, consciousness is different. So this is very, very important thing. And same thing today's verse are describing. So here see, this was yesterday we had discussed मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय. इस श्लोक को हम लोगों ने एक लाइन में समराइज किया था. क्या था इस श्लोक का एक लाइन में अंडरस्टैंडिंग? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा. सारे हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस हमारे माइंड में हमने क्रिएट किया. एक्चुअली में हैप्पीनेस डिस्ट्रेस नाम की कोई चीज ही नहीं है, हमने क्रिएट किया. ये हैप्पीनेस ही है डिस्ट्रेस. और फिर भगवान बोल रहे हैं आगमा पाइनो अनित्य. बट ये हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस जो हमने क्रिएट, पहली बात तो ये सत्रुत नहीं है, और दूसरी बात जो आपने क्रिएट भी किया है. और कोई बोल सकता है ना, ठीक है ना, क्रिएट करके एंजॉय करने में क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी? हमने क्रिएट किया ना, मुझे अल्टीमेटली वी वांट टू एंजॉय. सो व्हाट इज द हार्म इन क्रिएटिंग एंड एंजॉयिंग? लेट अस क्रिएट एंड एंजॉय, नो गो ऑन एंजॉयिंग. प्रभु आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? हाँ, प्रॉब्लम हमें नहीं है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर है. कृष्णा ने बोल दिया अनित्यम. कृष्णा जो कि क्रिएटर है, आप कृष्णा से इंटेलिजेंट नहीं है भैया. आप अपने आप को कृष्णा से ज्यादा स्मार्ट मत समझना. तो कृष्णा ने बोला अनित्यम, ये सब अनित्य है, टेम्परेरी है. कब तक आप ऐसे क्रिएट करते रहोगे? एक दिन आप बूढ़े हो जाओगे, सेंसेस आपके फिर भी डिमांड करेंगे, माइंड डिमांड करेगा, बट सेंसेस आर इनएक्टिव नाउ. आप बॉडली वीक हो गए ना, सेंसेस डिमांड करेगा नाउ, लेट मी वॉच दिस, लेट मी ईट दिस, लेट मी हैव सेक्स. ऑल द माइंड विल डिमांड इवन ओल्ड एज. Don't think that old people don't go get such desires. They are not Goswami. They are not devotees, pure devotees. Only pure devotees don't get such desires, materialistic desires. Otherwise, even old people, they get desires. They get attracted by even young girls by seeing them. But senses are not active. Their senses are useless, so they cannot indulge into it. है ना? So अनित्यम, ये टेम्परेरी है. सो माइंड में क्रिएट करने कोई सेंस नहीं है. और अगर आप सोच रहे हैं कि इंजॉय कर भी लूंगा, तो कब तक कर लेंगे आप? सेंसेस जब से तक स्ट्रांग है, व्हेन ब्लड इज बबलिंग, यू आर एनर्जेटिक, वी आर यंग. एक बार बूढ़े हो गए, दैट टाइम योर सेंसेस विल डिमांड, बट बॉडी इज वीक, यू कैन नॉट हेल्प इट. सो अनित्यम, ये टेम्परेरी है. सो इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं जस्ट टॉलरेट एंड फोकस ऑन हायर थिंग, है ना. एंजॉयमेंट विच इज नॉट बाउंड बाई दिस सेंस ऑब्जेक्ट्स. आपको अभी हमारा क्या एंजॉयमेंट का फंडा क्या? अगर सेंस ऑब्जेक्ट मिले और सेंसेस कांटेक्ट में आए, तभी हमें आनंद मिलेगा. ये हमारा हैप्पीनेस का एक डेफिनेशन है. आंख को एक अच्छा फॉर्म दिख जाए, एक अच्छी लड़की, एक अच्छा लड़का, जो भी दिख जाए, देन वी एंजॉय. ये हमने एक डेफिनेशन बनाया. कान के लिए एक अच्छा सॉन्ग, जब जीभ के लिए एक अच्छा टेस्टी फूड. मतलब टंग, मतलब सेंस एंड सेंस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट से हमें आनंद मिलता है. ये हमारे हैप्पीनेस का डेफिनेशन है. पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है, लेकिन ये कंडीशनड है ना. आप बूढ़े हो जाएंगे तो ये एंजॉयमेंट नहीं कर सकते आप. योर लाइफ विल बी फ्रस्ट्रेटेड. इसलिए बूढ़े लोग को लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि बिकॉज लोग बोलते हैं बूढ़ा सटिया आ गया है. बिकॉज वाई दे कैन नॉट नाउ, दे आर होल लाइफ दे वर बिजी इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, मींस सेंसेस एंड सेंस ऑब्जेक्ट. अब सेंस वीक हो गया, सेंस ऑब्जेक्ट सामने है, सेंस इंडल्ज हो नहीं सकता, तो फ्रस्ट्रेट रहते हैं बेचारे. सो देयरफॉर अगर उन्होंने भगवान के नाम को जप करके आनंद लेना शुरू नहीं किया, तो बुढ़ापे में बहुत सफरिंग होता है. सेंसेस डिमांड कर रहे हैं, आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, इसलिए गुस्साते हैं, चिल्लाते हैं. तो ये अनमोटिवेटेड एंजॉयमेंट कैसे लेना, उसको सीखना है. और अनमोटिवेटेड एंजॉयमेंट कैसे मिलेगा? व्हेन यू हैव स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल सेंस हमारे पास. चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इसलिए देखिए हमारे इंडियन कल्चर इवन टुडे, हमारे घर में, अपने घर में आपने देखा होगा, जैसे ये थोड़ा ओल्ड साइड जाते हैं, वो राम 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 नाम लेते रहते हैं, वो भगवान में थोड़ा इंटरेस्टेड होने शुरू कर देते हैं, क्योंकि कल्चर अभी तक सही था. लेकिन हमारे हमारे एज से, हम लोगों के कल्चर से, जहाँ पर अभी हम लोग स्टैंड करते हैं, इस जनरेशन से जब हम लोग बूढ़े होंगे ना, तो और पहली बात तो बूढ़े होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर होंगे भी तो हमारा सिचुएशन बहुत मिजरेबल होने वाला है. बिकॉज वी आर नॉट डेवलपिंग द टेस्ट इन चैंटिंग. अर्लियर एटलीस्ट
हमारे फादर मदर आप लोग देखें, सो दे आर एटलीस्ट समवॉट गॉड कॉन्शियस, तो बूढ़े में वो वही राम नाम लेंगे, सो देयर सिचुएशन विल बी एटलीस्ट गुड। बट हमारे सिचुएशन में क्या होगा सोचो आप। तो दीज आर ऑल टेम्परेरी, सो वी शुड लर्न नाउ ओनली। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में चलेंगे हम प्रैक्टिस करेंगे। कौमारम आचरेत प्राज्ञो, कौमारावस्था मीन्स 5 साल की उम्र से ये नॉलेज लेना शुरू कर देना है। 5 साल से इनकलकेट करो अपनी लाइफ में। ये ऐसा नहीं कि एक दिन सीखा और इनकलकेट प्रैक्टिस में आ गया। इट टेक्स टाइम टू प्रैक्टिस। अभी मैं जैसे नॉलेज दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कल से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, नहीं। ये टाइम लेता है। एवरी डे अगर आप आएंगे, सुनेंगे, यू हियर एवरी डे, देन आपके माइंड में बैठता है, अच्छा हाँ यार इसको प्रैक्टिस। देन स्लोली स्लोली यू स्टार्ट अप्लाइंग योर लाइफ। एक दिन आए, एक दिन चले गए, ऐसे मजे लेने चलो थोड़ा प्रभु जी, थोड़ा कभी कभी अच्छा भी बोल देते हैं, आओ चलो थोड़े जाओ। ऐसे कुछ नहीं होने वाला फिर। ऐसे आपकी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं है। अब जब से तक ये नॉलेज प्रैक्टिस नहीं है, देन इट्स नो यूज। थोड़ा बहुत सेंस आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया तो हो सकता है फ्यूचर में आपको रिकॉल हो कि हाँ यार प्रभु कुछ बात तो किया करते थे, चलो थोड़ा सा फिर से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये नॉलेज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, बहुत काम आने वाला आपको प्रैक्टिकल लाइफ में। हर एक स्टेज में काम आएगा। तो रेगुलर अटेंड करना, नित्यम भागवत सेवा, एवरी डे टेक आउट हाफ एन आवर एंड अटेंड द क्लास, बिकॉज डेली सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो एक दिन माइंड बैठ जाएगा कि हाँ यार एक्चुअली में लाइफ टेम्परेरी है, चैंटिंग करना है, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। और बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज सारे प्रॉब्लम्स है, एक्चुअल प्रॉब्लम्स है। ये मटेरियल अचीवमेंट तो आएगा जाएगा, बट एक्चुअली मैं बॉडी नहीं, मैं स्पिरिट सोल हूँ, कृष्णा सुप्रीम स्पिरिट सोल है, मैं कृष्णा को बिलोंग करता हूँ, मैं कृष्णा का हूँ, मैं कृष्णा से इटरनल रिलेशनशिप रखता हूँ। ये सारे सुनते रहेंगे जब हम लोग, तब माइंड में बैठेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन आए, हाँ चलो ठीक है समझ लिया, भगवदगीता ओवर, चलो कंटिन्यू मटीरियल सेंस ग्रेजुअली। दिस इज नॉट द थिंग, दिस इज नॉट द वे। एक दिन मोटिवेशन लेके चले गए तो कुछ नहीं होने वाला। ये टाइम लगता है। सो इट इज सेड कौमारम, फ्रॉम द चाइल्डहुड, फ्रॉम 5 years एज यू शुड प्रैक्टिस दिस। लेकिन अभी क्या है, अभी का ट्रेंड, अगर आप भगवदगीता क्लास में रेगुलर आएंगे ना, तो पेरेंट्स थोड़ा फियर करने लग जाएंगे। अरे तू क्या करता है, ये डेली भगवदगीता क्लास अटेंड करता है और चैंटिंग भी करने लगे आप तो, सुबह सुबह उठ के। प्रभु जी ने 6:15 बजे चैंटिंग स्टार्ट किया, ये देखता हूँ ये हमारे बच्चे थोड़ा चैंटिंग करने लग गए हैं, कुछ तो गड़बड़ है, ये कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये। अभी ये सब चलता है डिस्कशन पेरेंट्स के बीच में। दे आर फियरफुल, दे आर नॉट हैप्पी कि यार बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है, चलो बेटा और करो, अच्छे से करो, हमें भी सिखाओ क्या प्रभु ने बताया, चलो थोड़ा बताओ लाइफ क्या है, बर्थ क्या है, डेथ क्या है। ये नहीं पूछेंगे। पूछेंगे अच्छा बेटा तुम्हारा अच्छा सीजी आया, अच्छा क्या करोगे, अच्छा क्या प्लानिंग है तुम्हारा, ओके सो यू प्लान स्टार्टअप, ओके वेरी नाइस। तो इंटर्नशिप लग रहा, 3rd year में आ गए हो, नहीं लग रहा अभी थोड़ा अच्छा ठीक है अच्छे से पढ़ाई करो। ये सब इंक्वायरी करेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि बेटा अच्छा तुमने भगवदगीता में जो प्रभु ने बताया क्या अच्छा समझ में आया तुमको, थोड़ा मुझे भी बताओगे क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है, लाइफ क्या है यार, लाइफ में मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। अपनी रियल लाइफ नहीं बताएंगे कि कितने फ्रस्ट्रेटेड है, कितने एंग्जाइटी में रहते हैं, और उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। बस हाँ वो आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपने बेटे को भी उसी ट्रैक में डाल रहे हैं, तुम भी फ्रस्ट्रेट हो जाओ। और उस भोलेंगे भगवदगीता छोड़ दो, ये सब बेकार है, ये साधु बना देंगे, है ना। सबसे बड़ा डर डर क्या रहता है, तुमको साधु बना देंगे, तुमको लाइफ, तुमको हमसे दूर लेके चले जाएंगे, तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, सो मेनी थिंग्स दे विल से टू यू। और फिर बोलेंगे छोड़ दे, और आप भी एक दिन ऐसे ही आते आते छोड़ दोगे। दिस इज व्हाट हैपनिंग टुडे अनफॉर्चुनेटली। इससे अच्छा तो मैं बोलता हूँ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स बाई बर्थ दे ट्रेन, चलो चलो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, 6 बार तो नमाज पढ़ने के लिए भेजता है। और जब जब नमाज पढ़ता है उसमें लिखा रहता है कि नॉन मुस्लिम्स आर काफिर, उनको मारो। तो बचपन से उनके माइंड में डाला जा रहा है कि नॉन मुस्लिम्स को मार डालो, मार डालो, मार डालो, एंड दे आर ट्रेंड। तो मेरे कल हमारे कल्चर से तो उनका कल्चर एटलीस्ट उनको ट्रेन कर रहा है, भले ही वो डिस्ट्रक्टिव है, भले ही वो डिमोनियक कल्चर सिखा रहे हैं, एटलीस्ट सिखा। हमारे हिंदू कल्चर में स्टॉप करते हैं, अरे मत जाओ मत जाओ, छोड़ो, मंदिर जाना बंद करो, भगवदगीता पढ़ना बंद करो, चैंटिंग करना बंद करो। हमारे फ्रेंड्स मॉक करेंगे, बोलेंगे हम हिंदू हैं, 15 अगस्त के दिन 3 तिरंगा झंडा लहरा देंगे, वो हिपोक्रेसी है ये तो। भगवदगीता पढ़ा नहीं है और तिरंगा झंडा लहरा रहा हो, व्हाट, हु हैज गिवन यू द राइट टू फ्लो, टू है ना, झंडा लहराने का। इफ यू नॉट रेड भगवदगीता, किस बात के तुम हिंदू हो बताओ। तुमसे अच्छा तो जानवर है। तो ये आर्टिफिशियल लाइफ इज गोइंग ऑन, डुप्लीकेट लाइफ, डुप्लीसिट लाइफ। सो वी शुड लर्न दिस नॉलेज, वेरी वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज। यहाँ देखो ये नॉलेज में क्या क्या प्रैक्टिकल नहीं है बताओ। इस नॉलेज जैसे श्लोक मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, क्या इसमें प्रैक्टिकल नहीं बताओ। एवरी लाइन इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। कृष्णा बोल रहे हैं हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस इज बेस्ड ऑन सेंस परसेप्शन, इसमें कहाँ गलत बोल रहे हैं भगवान बताओ। बट पीपल विल से ओ भगवदगीता तो सब माइथोलॉजी है, ये कर्नाटक में गवर्नमेंट ने भगवदगीता को
कंपलसरी करने की कोशिश की, तो कांग्रेस गवर्नमेंट इतना डिमोनियक है, बोल रही भगवत गीता क्यों इसको इंट्रोड्यूस करना है, इसमें कोई सेंस। अरे यार, इतना साइंटिफिक नॉलेज है, तुमको इतना सेंस नहीं है कि ये कितना इंटेलिजेंट, कितना इंपॉर्टेंट नॉलेज है। बचपन से ही अगर सिखाया जाए तो पीपल विल नॉट इंडल्ज इनटू बैड हैबिट्स। ये सेंस परसेप्शन से डेवलप किया तुमने, ये एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं है। इस श्लोक में बताया जा रहा है, कृष्णा बोल रहे टॉलरेट करो, टॉलरेट करना सिखाया जा रहा है। अर्जुन, यू टॉलरेट, इट विल कम लाइक समर सीजन एंड विंटर सीजन, यू जस्ट ट्राई टू लर्न टू टॉलरेट इट। बट आज टॉलरेंस कहाँ सिखाया जा रहा है? कौन से स्टूडेंट को सिखाया जाता है बेटा टॉलरेट करना सीखो? पीपल आर शॉर्ट टेम्पर्ड, टॉलरेंस सिखाया ही नहीं। टॉलरेंस इज अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बट आज किसको टॉलरेंस सिखाया जा रहा है बताओ? यहाँ भगवत गीता भगवान सिखा रहे हैं सच अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस। कहाँ ये माइथोलॉजी बताओ, कहाँ पर ये प्रैक्टिकल नहीं है? सो प्रैक्टिकल, एवरी डे यू वांट दिस नॉलेज, अदरवाइज विल बी इन सो मच पैनिक स्ट्राइक इन कंडीशन। कुछ भी हुआ इमीडिएटली विल बी पैनिक स्ट्राइक इन। सो वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, एवरी वर्ड्स ऑफ भगवत गीता इज वेरी वेरी डीप, बट हम तो इसको वैल्यू नहीं देखते देते, वी जस्ट डिस्कार्ड इट, वी जस्ट निग्लेक्ट इट, एंड हम अपने सेंस ग्रैड अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। एक दिन कर्टेन जब क्लोज हो जाएगा, देन पता चलेगा। सो वी शुड बी इंटेलिजेंट, है ना? एंड देन इन दिस 15th वर्स कृष्णा सेज, टाइम नहीं है, ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। ओ बेस्ट अमंग द पर्सन्स हु इज नॉट डिस्टर्ब बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस एंड इज स्टडी इन बोथ इज सर्टेनली एलिजिबल फॉर लिबरेशन। तो यहाँ पर पहले वाले श्लोक में बोले कि हैप्पीनेस डिस्ट्रेस को टॉलरेट करना, उसे डिस्टर्ब नहीं होना है। और फिर यहाँ पर इस श्लोक में बोल रहे हैं जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस से डिस्टर्ब नहीं होता है, एक्चुअली ही इज द बेस्ट फिट फॉर लिबरेशन। ही ओनली कैन बिकम लिबरेशन मीन्स वो एक्चुअली ही कैन अचीव हिज रियल पोजिशन ऑफ constitutional position of soul. He can go back to Krishna. So Prabhupada is writing here same thing कि हमें डिटरमाइंड होना है कि हमें एडवांस करना है स्पिरिचुअल लाइफ में। ऐसा नहीं चलो ठीक है, एंड वी हैव टू टॉलरेट द ऑनस्लॉट्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस, ये आएगा बट हमें टॉलरेट करना है ना? एंड नेक्स्ट वर्स, लास्ट वर्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स। I am saying every verse the most important one because all the verses are most important. Therefore, in all the verses I say the most important verse. तो आपको हंसने की जरूरत नहीं है। ये देखो, इसमें बहुत अच्छे से कृष्णा ने एक्सप्लेन, ना सतो विद्यते भाव, ना असत, असत मीन्स असत टेम्परेरी, विद्यते मीन्स विद्यमान, भाव मीन्स भाव मीन्स एंड्योरेंस। सो असत जो है वो विद्यमान, विद्यते न अभाव, जो असत है वो एंड्योर नहीं करता है, मीन्स वो टेम्परेरी रहता है। जो असत, असत मीन्स टेम्परेरी, असत डज नॉट एंड्योर, एंड न अभाव विद्यते सतः। और जो न सता, जो असत है, जो न सता मीन्स, न सता मीन्स असत, जो असत है वो अभाव है। अभाव मीन्स, अभाव मीन्स कमी। सेसेशन, जो एंड्योर नहीं करता। सो इसका मतलब है कि जो सत है वो एंड्योर करता है, और जो असत है वो एंड्योर नहीं करता है, दैट डिटीरियोरेट्स इन टाइम। सो उभयोर अपि, और उभय मीन्स दोनों को, दृष्टो देखा है, कौन? अन्योस तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने ट्रुथ को देखा है, समझा है, और स्क्रिप्चर्स को पढ़ के, वर्ल्ड को पढ़ के, अपने आप को पढ़ के समझा है, उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः, उभयोर अपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस तत्वदर्शी भी। जो तत्वदर्शी हैं उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि जो एग्जिस्ट करता है वही सत है, और जो एग्जिस्ट नहीं करता है वो असत है। तो आप देखो, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, कोई टेम्परेरी, कोई इटर्नल है क्या? कोई इटर्नल नहीं, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। सो एक्चुअली एवरीथिंग इज असत। असत मीन्स असत, इसमें कोई डाउट नहीं है, असत बोलने में घबराना नहीं चाहिए। जो टेम्परेरी है उसको असत बोलना है, यहाँ बोला गया, भगवान ने बोला असत है, जो टेम्परेरी वो असत है, और जो इटर्नल है वही सत है। इसलिए मरते समय क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? राम नाम ही केवल सत्य, क्योंकि राम नाम ही इटर्नल है, और बाकी तो असत है। बॉडी असत है, मर गई बॉडी, अब जाके जलाने जा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। तो यही राम नाम सत्य अगर उसको बचपन में ही सिखा दिया होता तो जब करके अपने लाइफ को सेटल कर लेता, भगवान धाम चला जाता। अब चार लोग कंधे से उठा के उसको राम नाम सत्य बोल रहे हो, कितना फुलिश अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो तुम लोग। पहले ही सिखा देते राम नाम सत्य है। तो पहले तो सिखाया नहीं, पहले तो बोले मूवी देखो, पहले तो बोले सेंस ग्रेटिफिकेशन करो, अब जो मर गया तो बोल रहे राम नाम सत्य है। तो पहले ही सिखाओ ना राम नाम सत्य है। और जब पहले अगर राम नाम बोलेगा, वो हरे कृष्ण मंत्र जप करेगा, तो उसको मना करेंगे नहीं, हरे कृष्ण मत करो, तुम पढ़ाई करो। अरे पढ़ाई करके क्या करेगा? मरेगा एक दिन। तो पढ़ाई के साथ साथ तो हरे कृष्ण भी जप करने दो ना उसको।
है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो टेम्परेरी है वो असत है, जो सत है वो इटर्नल है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सत एंड असत? जो सत है दैट शुड बी इटर्नल, एंड our soul is eternal, our relationship with Krishna is eternal. So this only is sat and truth. Sat means truth, and other everything is false. False means temporary. The definition of false is temporary. Everything else is temporary. आपकी लाइफ टेम्परेरी है, आपका रिलेशन टेम्परेरी, आपका अचीवमेंट टेम्परेरी, आपके आपका कलर टेम्परेरी, आपका ब्यूटी टेम्परेरी है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी, मीन्स असत, फॉल्स है सारी चीजें। ट्रुथ क्या है? सोल ट्रुथ है, भगवान से आपका रिलेशन ट्रुथ है, भगवान का नाम ट्रुथ है, राम नाम सत्य है, ट्रुथ है, और बाकी सब असत्य। ये कौन बोला है? ये कृष्णा ने ये श्लोक बोला है, कृष्णा ने बोला है। और कृष्णा भी किसको बोल रहे हैं? तत्वदर्शी। कृष्णा ये भी बोल रहे हैं कि मैं ही नहीं बोला, तत्वदर्शी ने भी ये बोला है। तो हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते इसको। वही सेम चीज यहाँ पर होगा, लिख रहे हैं। सो एक ये लाइन पढ़ के हम लोग एंड करेंगे। रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस इन्वॉल्व्स द रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ इटर्नल रिलेशनशिप बिटवीन द वर्शिपर एंड वर्शिपेबल, and the consequent understanding of difference between the parts and parcels, living entities and the supreme personality of Godhead. So जब हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण मंत्र, तो ये रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस होता है, और ये होता है फिर रिस्टैब्लिशमेंट ऑफ इटर्नल रिलेशनशिप। जैसे तक ये नहीं होगा तब से तक ये नहीं होगा। तो अगर ये रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस होगा तभी रिस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप होगा कृष्णा से। सो हमारे कृष्णा से एक रिलेशन है, भूल गए हम लोग उसको रीस्टैब्लिश करना, इसलिए यहाँ वर्ड यूज किया रीस्टैब्लिश। यहाँ स्टैब्लिश नहीं बोला, रीस्टैब्लिश बोला है। वी ऑल हैव रिलेशनशिप विद कृष्णा, बट वी हैव फॉरगॉटन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस दैट वी आर दिस बॉडी। लेकिन जब जैसे जैसे हम बॉडली कॉन्सेप्ट से सोल प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो हम रियलाइज करते जाएंगे, यस आई हैव रिलेशनशिप विद कृष्णा, कृष्णा इज माई ओन, कृष्णा इज नॉट somebody else's, कृष्णा इज माइन, कृष्णा इज, आई बिलोंग टू कृष्णा। ये अंडरस्टैंडिंग तब आएगा जब हम डेली बेसिस पे नित्यम भागवत से डेली भगवद गीता सुनेंगे क्लास में और चैंटिंग करेंगे। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू काइंडली every day attend the classes and learn the chanting every day. Don't remain foolish, become intelligent. And भगवत गीता क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो विल रिमेन फुलिश एंड वी कैन नॉट चैंट। सो क्लास अटेंड करना जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट चैंटिंग करना। सो इन द मॉर्निंग you get up 6 o'clock at least and be ready for 6:15 chanting time every day which we have started. Many of you have joined and they are feeling very nice. मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी, तो they are feeling very nice and whole day they are active. So I request everyone to, if you also want to feel that spiritual bliss energy, get up about 6 o'clock before only and be there in our chanting session, japa session at 6:15, and understand, realize and relish the spiritual happiness. Anna? So with this we'll stop here. Anybody has any question to ask, so you can ask, otherwise we'll now close. किसी का क्वेश्चन है चैट बॉक्स में? हाउ टू be steady in happiness and distress, learning the science of the spirit soul. This too shall pass, everything is temporary, I belong to Krishna. Then you will learn easily. जैसे suppose for I'll give you an example. कोई एक पर्सन है, जब वो छुट्टियां होती है ना, जब फर्स्ट ईयर वाले होते हैं कॉलेज जब जाते हैं, तो कॉलेज जब फर्स्ट टाइम छुट्टी होती है ना, तो घर जाने की पड़ी रहती है उनको, घर जाना, कैसे घर जाऊं। तो फर्स्ट ईयर वालों को जनरली छुट्टी मिलती है दशहरा पे, दशहरा पे 8-9 दिन छुट्टी होती है, तो वो घर जाना चाहते हैं। सो दैट टाइम दे आर वेरी एक्साइटेड टू गो टू देयर होम, बिकॉज कॉलेज में आए ना, उन्होंने एक्सपीरियंस की ना, घर जाके वो फ्रेंड्स मिलेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स मिलेंगे, शेयर करेंगे क्या क्या कॉलेज में उन्हें किया और सारी चीजें। सो दैट टाइम सपोज यू डोंट गेट अ सीट, ट्रेन आपका नहीं मिला, आपको आपको बुकिंग नहीं हो पाया आपका। सो सम और अदर यू विल ट्राई टू सिट इन द ट्रेन, जनरल बोगी में बैठ जाओगे, लेकिन यू विल गो टू योर होम। जनरल बोगी सो वेरी कंजेस्टेड नो, बट स्टिल यू विल गो एंड सिट इन द जनरल बोगी। बाथरूम में बैठ जाएंगे, बाथरूम के बगल बदबू आ रहा है वहां बैठ जाएंगे, लेकिन घर जाएंगे। वही कि हमें घर जाना है, घर वालों से मिलना है। सो दैट थॉट ऑफ गोइंग एंड मीटिंग टू द पेरेंट्स, ये थॉट ही, ये जो मिजरीज आ रही है ना वहाँ बाथरूम के बगल, टॉयलेट के बगल बैठ के बदबू जो आ रही है, वो उसको बॉदर नहीं करता। ही इज नॉट बॉदर्ड कि मैं कहाँ बैठा हूँ, टॉयलेट के बगल बैठा हूँ क्या।
he just think that oh 12 घंटे की बात है, 24 घंटे की बात है, अभी तो खत्म हो जाएगा, I'll go to my home and I'll meet the people. And in that thought he is there, and is not at all bothered about this temporary problems which he is facing. He is into higher understanding, higher bliss. In the same way, when we have higher understanding that we belong to Krishna and the problems which we are facing today is temporary. Anyway, this is temporary and this too shall pass. So let me focus in my relationship with Krishna, chant Hare Krishna nightly and all these things. Then you'll not be bothered. You will be fixed in happiness and bliss. So I think this gives understanding of your question. Anybody else wants to ask any question? कोई और पूछना चाहता है, अपने दिल की बात शेयर करना चाहता है? आदित्य, अजय, अनु, अरला, धीरज, पीयूष, सुचेता. No question? Thank you. Hare Krishna. Please continue your other things. Hare Krishna. So tomorrow, I hope all of you will be there available for our morning japa session at 6:15. Okay? Hare Krishna.